I'm just getting the guitar ready. Just give me a minute. Yes, I'm going to setting, and then I will start, and after you can start worship. मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का फजल हम सब पर हमेशा हमेशा बना रहे। हम होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आज हम सब एक बार फिर आपकी खिदमत में हैं और हम जो हैं खुदावंद की बरकत और खुदावंद का फजल हम अपने लिए और आप सबके लिए भी चाहते हैं कि हमेशा हम उसके साथ वफादारी से चलते रहें। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए हम उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं, हम उसे मुबारक कहते हैं क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, उसी ने हमें जो है वो इस काम के लिए खड़ा किया है, उसी ने हमें चुना है कि हम उसकी खिदमत के लिए आगे बढ़ें, उसी ने हमें चुना है कि हम जो है उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम शुक्रगुजारी की दुआ जो है डॉक्टर रवि प्लीज you lead us in prayer. Okay, we'll pray. Heavenly Almighty Father, thank you, Lord, for giving this beautiful opportunity here along with the Holy City Ministries and World Evangelization in our days. Together want to share the gospel of the Bible, evangelism of the Bible to the world. Thank you for giving this time. Please control this time, and thank you for being in our midst. And all who has to attend, they may attend earlier. Give them possibilities. And all who are listening today, let them listen your voice through Sister Vandana. Use her mightily to share the lecture. And we all together complete the world evangelization in our days. Thank you for giving this beautiful opportunity. Bless all who has attended. In Jesus, the Christ's name, I am praying. Amen. 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 Okay, now we have Sister Vandana, and Sister Vandana, please lead us in worship. Yes, praise the Lord. Glory to God. It is a beautiful time. Let us move into the presence of our Father in heaven, and let us welcome the Holy Spirit of God in our midst. Thank you, Holy Spirit of God, for this time of worship. I pray that you take charge of our thoughts and our minds, and I pray that you may take throne in our hearts, and that whatever I may worship this evening, that I may worship you in spirit and in truth. So there's a Hindi song which says, Bhavar ke beech mein तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी
भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। हाँ पिता, चाहे कैसी भी उफान क्यों ना आ रहा हो, चाहे कैसे भी विरोध हमारे जीवन में क्यों ना आते हो पिता, चाहे कैसी भी लहरें क्यों ना आती हो, उन लहरों पर भी तेरे कदमों के निशान है, उन लहरों पर भी तू है हमारे लिए। और उस भंवर के बीच में तू कहता है कि थम जा, क्योंकि तू मेरी ताकत है, तू मेरा ईमान है। तो हर प्रकार का वो तूफान जो आज हमारे जीवनों में है, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि थम जाए पूर्ण रीति से, और वो थम जाएगा जब हम उसे कह देंगे कि तू मेरी ताकत है और तू ही मेरा ईमान। और आगे ये गीत कहता है, बीमारी ले तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, बस ना ऐसा चला। कोई शस्त्र ना बना। बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपके निशान, आपके कदम हमें जो है अपनी गोदी में बाहों में लिए आप चलते हैं पिता। सो कौन सा उफान, कौन सा तूफान है जो हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है, क्योंकि यदि तू हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पिता तेरी इस मजबूती में हम बने रहें। आज की शाम यही मेरी आराधना है और यही मेरी ख्वाहिश और गुजारिश है कि हम सबके जीवन में प्रभु तू हमारा शरण स्थान और दृढ़गढ़ बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, जाहिर आप लेक्चर भी अपने डिलीवर करना है, तो इसलिए हम मजीद जो है वो आपसे नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर जब आप हो तो हम। और बहुत जबरदस्त वर्शिप, थैंक यू। अब हमारे साथ मारिया और फ्रोबल हैं, वो वर्शिप करेंगे, फिर उसके बाद वो एक कोर्स गाएंगे, फिर हम दुआ के बाद हम अपने आज के लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। मारिया एंड फ्रोबल। हालेलुया, सी के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनकी वर्शिप करेंगे। आपकी सलामती भी हो। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे रहम की पुरवाह चलती रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया मेरे ख्यालों की दुनिया में
मेरी सोचों सांसों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरी सोचों सांसों में यीशु नाम से बरकत आती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया। तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, और कलाम की खुशबू से अंधेरों में ज्योति जलती रही। हम तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया। रूखा मसा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती रहे, रूखा मसा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती रहे, और मामूरी बढ़ती रहे। हम तुलते रहे और घटते रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे। मुझे लगता है कि उनका थोड़ा नेट इश्यू हो गया है। ओके, हमारे साथ है ब्रदर सानिया पलका। ब्रदर, आर यू देयर? Yes, yes, sister. Yes. ओके, आज की हमारी सिस्टर जो है, सिस्टर वंदना, वो आज का जो लेक्चर डिलीवर करेंगे, तो आप उनके लिए दुआ करें, तो फिर हम। Okay, okay. So let us pray. Abba, Father, I do thank you and praise you, Lord, for this wonderful occasion and the time that thou hast rendered in our life as a special. Father, as we come to thy presence, O God, it is all because of you. We thank and we praise you. Father God, as long as we are in thy presence, please be with us and guide us. And also, especially, I pray for Sister Vandana, one who is going to deliver the word of God. Please bless her abundantly and give her the heavenly knowledge and wisdom, so that through thy knowledge and wisdom she should glorify you and she should honor you and she should exalt your holy name, O God, which is worthy to be exalted by the human being, O God, in this world or in this earth. Father, as long as she is going to speak, whatever also it may be, let through her mouth you should use her and let your words deliver, O God. So once again, I remember the members who all have joined in this platform this evening or this morning for other country. Oh God, please bless us together so that we all together should join our hands and bow down before you and glorify you, God. Father, please help us and guide us. Let your Holy Spirit should lead us as long as we are in thy presence. And everything and all the situation and circumstances I submit in your hand. I give all my honor and glory unto you
and ask this humble request in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Okay. Okay, brothers and sisters, now we are going to start our lecture today. Today's lecture is lecture number 11. It is Evangelism of the Bible. And we welcome to our sister Vandana Grace. She is going to deliver the lesson and lectures today. Sister Vandana, we welcome you. And thank you so much, Sister Nasreen. And Welcome. greetings to all the disciples of Jesus the Christ in Canada. And it's a great privilege and opportunity for me to share lecture number 11 of 12, which is titled The Evangelism of the Bible. Now, it's a very important topic over here. And we know that obeying the covenant is to evangelize the world. And we all know what is the vision of Mission World Evangelism, Matthew 24:14. And that is why we are here, because we believe in evangelizing of the gospel across the world. But now the question to us is, how can we evangelize the world? Many people have tried many different methods of evangelism, and you will all agree with me, and even you must have tried different methods of evangelizing, and some people have even tried to apply the things that great churches do, and they copy their methods in their own countries. But even then, we have not been able to evangelize according to the Bible. And that is why I have come with this lecture before you today, that we may know what is the method of evangelizing according to the Bible. Now, if you look at the believers today, they are afraid of evangelizing. Some feel that evangelizing is a burden. Others feel that it is something very hard to do. But I want to tell you that the Lord has given us the way to evangelize not only the gospel, but also the way to evangelize according to the Bible has been given to us in the Bible itself, about which we are not aware. So my question is, why must we evangelize according to the Bible? See, if your purpose is that your church should grow or your numbers of members should increase, then we do not need the evangelism of the Bible. We can just say, oh, there's food in the church, or we will have lunch after the church, come, and many people will come, and you will have a full church. But that is not what God is asking from us. God wants us to make disciples of all nations, to preach this message of the true gospel of Jesus the Christ to all the nations. And he has shown us the way through Jesus the Christ. So if you people, all those who are present here this evening, if you truly intend to save all our countries, and if we are truly devoted to saving all the world, then we need to truly do the evangelism of the Bible. Because the evangelism that is done outside of this true evangelism may have some roots in the Bible, but they are mixed with human thoughts, with human methods. Now see, if you are not very clear about what is the biblical, true, correct method that was given by Jesus to evangelize, then you will have your own human method, which will be mixed with the human culture. And so we will do an evangelization, which will be a mixture of human thoughts and human culture. And so that is why it is most important for us to know today what is the evangelism of the Bible. We must apply the principles of the Bible's evangelism, because we need to save all the world, right? A method that works in the entire world in the same manner. For example, a method that works in Pakistan will not work in Korea. A method that works in Korea may not work in UK. So we need a message that can save all of the world together, regardless of culture, regardless of language. And that is the way of the Bible. That is the evangelism of the Bible, which does not change due to culture, which does not change because of language, and which remains the same, because the evangelism of the Bible is the evangelism of Jesus being the Christ, Jesus being the Messiah. And this evangelism stays the same in whatever culture you may be, in whatever country you may be, because this is the truth that once we know the truth, we will evangelize on the truth.
Now, Jesus showed us a model to imitate. If we look at Matthew chapter 4, verse 17, it says, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. Now, this message, when Jesus came and he preached this message, it was a very simple message. It was not a long message. It was not a great message. Maybe, but his message was very clear. Repent, for the kingdom of heaven is near. He was talking about the judgment of God, and he was talking about the kingdom of God. So who is the kingdom of God here according to the scripture? Jesus was the kingdom of God. Jesus had brought the kingdom of God down onto the earth, and he was saying, I am here, I have come, and I'm doing my work as a Messiah. And he was saying that everything that is happening now, the kingdom has come in the form of me. This is real. So you must repent that you have not held on to the gospel. You have not held on to the promise. Repent and come with an open heart to the Messiah. So this was the preaching in Matthew chapter 4, verse 23. And it says Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sicknesses and all manner of diseases among the people. We see here how Jesus did many things, but first and foremost, he went to the synagogue and preached. And we have already discussed that he preached about himself and he spoke about the kingdom of God, which is he, the Messiah, he, Jesus the Christ. That, and he also spoke about the things that were written in the scripture, spoken by the prophets, and of all the laws which were being fulfilled in the form of Jesus. So he was not only going to the synagogues, he was going everywhere and he was healing people and he made many miracles. But the reason behind the miracles, the reason behind the healing was not because he was compassionate. He was not only because he was compassionate about the people. No, but the reason behind all the healing miracles was because he wanted the prophecies to be fulfilled, which were given in the scripture and which were an evidence that Jesus was the Messiah. So that is the evangelism that Jesus did. But the evangelism of Jesus was very focused on preaching. Let us look at Matthew chapter 4, verses 18 to 22. Matthew chapter 4, let me read it for you here, verses 18 to 22, and it says, and Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, follow me and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed him. Going on from there, he saw two brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets. He called them and immediately they left the boat and their father and followed him. Now, do we see that Jesus tried to convince anybody over here? We see how he called the first disciples. Jesus, it's very simple. He was just walking and he just told them, come follow me and I will make you fishers of men. And they at once left their nets and followed him. And you know, this was so simple. This did not need any convincing. Jesus just simply told and they just started following Jesus. There is a more radical example, similar kind, which is found in John chapter 1, verses 43 to 51. John chapter 1, verses 43 to 51. Here we see the next day Jesus decided to leave for Galilee, and finding Philip, he said to him, follow me. So we see how Jesus had selected the disciples, how he found those worthy ones, and they were already called, they were already chosen, they were already prepared by the Spirit of God, and Jesus didn't need any convincing to do with them. And we see how they simply followed what Jesus told them. So here we see that finding disciples or calling disciples was not something that required training. He just said few words. He just said simple words and then they came. I'll explain a little bit later in detail what this means.
So please keep this in mind that Jesus preached and Jesus taught, but his objective was to testify himself as the Messiah. This was the evangelism that Jesus did. He called people simply and not in a very complicated manner. I have seen, and you people must have also witnessed, how we try to evangelize. And before joining Mission World Evangelism, I am a pastor's daughter. And so I know that, you know, this was a stronghold in my mind. I used to think that, oh, evangelizing, it's too difficult. You know, it's too complicated. I didn't know how to start, from where to start, what to say. And whenever I would start, I would just try to convince people. I would just take out as if I was selling a product. This is how I evangelized. You know, and it did not have any biblical grounds. It did not have any biblical principles, just a story to tell them. So we see how Jesus evangelized. He did not use a very complicated method, nor did he use a complicated manner. He did not use a very extensive manner. He revealed himself through miracles, healing works, and other signs. And he proved to them that he is a Christ. And he testified this very fact in Luke chapter 24, verses 25 to 27. Over here, we will read Luke chapter 24, verses 25 to 27. It says, "Then he said to them, O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. In all that the prophets have spoken, ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory?" Now, he's talking about the prophecy, the fulfillment of the prophecy. He's talking he's testifying with scripture that he was the Christ. So this is the evangelism of Jesus that he did about himself, and how he spoke about in different places in the Bible, and how he testified that through the healings, through the miracles, through the working, through other signs, that he is the Christ, he is the Messiah, and he is sent by God to bring about the redemption of mankind, to solve the problem of Satan, sin, and separation from God. So this is the evangelism of the Bible. This is the true gospel, that Jesus is the Christ. And unless we take this gospel in the manner that Jesus did, without any human thoughts, without any cultural parameters, Jesus did it very simply, without trying to convince anybody. Now, what was the evangelism that Jesus taught? Now, let us move on to the second point, the evangelism that Jesus taught. Let us look at Matthew chapter 10, verses 5 to 30. Matthew chapter 10, from verses, just a minute. This is Matthew chapter 10. Let's read from verses 5 and onwards. Matthew chapter 10 from verse 5. I will read it. Now, why is it so important? Because there are instructions given over here in this chapter about how we should evangelize. And these were the instructions that Jesus gave, not to his 12 disciples alone, but also to the 70 disciples that came later. So if you read in verse 5, Matthew chapter 10, from verse 5, I'm going to read. And it says, and it's very important, so I want everyone to pay close attention to it. "These 12 Jesus sent out and commanded them, saying, Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel." Now see, now you have to be very carefully looking at the different instructions that Jesus gave to his disciples, that not to go, not to enter a city of the Samaritans, but go to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So what were they supposed to preach? They were supposed to preach about the kingdom of heaven. And this is what Jesus also preached when he came. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, and freely you give. Provide neither gold nor silver nor copper in your money belts, nor bag for your journey, nor two tunics, nor sandals, nor staffs, for a worker is worthy of his food. Now, these are the different instructions that Jesus gave
to the disciples who went about evangelizing. Now, whatever city or town you enter, inquire who in it is worthy, and stay there till you go out. Over here, we see that Jesus is talking about the worthy ones. This is a very pragmatic method of evangelism that Jesus is instructing here. Jesus is asking them to do miracles, to do this, to do that. But all the miracle signs and wonders are introductory part only. But the main, the very important, the crux of it is to testify that the kingdom of heaven is near. And further, when we read, it says, now whatever city or town you enter, inquire who in it is worthy, and stay there till you go out. And when you go into a household, greet it. If the household is worthy, please pay close attention to the word worthy, which has come so many times here in this passage. If the household is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. And whoever will not receive you, nor hear your words, when you depart from that house or city, shake off the dust from your feet. Assuredly, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Now, these are, these are the simple instructions that Jesus is giving over here. And when he gave a certain type of instruction, he said, whatever town or village you enter, search for some worthy person there. That means there is a worthy person to go look for. And that means the Spirit of God has set aside or has kept worthy people in that city, in that town, in that place. And we need to just look for those worthy people and knock on their door and just say, peace be unto you. And if this person is worthy of your peace, then your peace will stay with him. Now, these are the instructions which also helps you understand that you do not have to worry about things. You do not have to do it in a carnal way. You do not have to evangelize in the worldly manner. You have to completely trust the Spirit of God. You have to just go and preach. Your work is to go and preach, and then to trust God that everything else which is required, God is going to provide for everything that you require. And when those worthy people will listen to your evangelism, your gospel, then that is going to stay with them and they are going to receive it. Why will they receive it? Because they have been prepared by the Spirit of God. They are just waiting for you. I want to tell you this. When I heard first time about this worthy person, you know, I used to, whenever I used to evangelize, I used to get so defensive and I used to get critical of people. Obviously, my understanding was not that open. And I used to feel, I was just trying too hard to present the gospel to them, whereas I myself was not very sure about the gospel. But the instructions that were given to the disciples over here, it tells us that the remnants, the worthy ones, the people who will receive the good ground of their heart will be prepared by the Holy Spirit of God. And you just have to go and preach. And by the healings, miracles that will follow there, they will know that the kingdom of God has come near. Right? For the word says that the kingdom of God is not a matter of words, but of power. So whenever Jesus went and preached, these miracle signs and wonders followed him. And that was a proof that the kingdom of God has come. And who is the kingdom of God? Jesus himself, being the Christ, was the kingdom of God. So this is over here that I was talking about the worthy person and the instructions that were given. So now let us look at let's look at Matthew chapter 13. And over here, I'm going to read out to you. In Matthew chapter 13, we see the different types of soil, the 4 parables. In this chapter, we find the 4 parables
of the kingdom of heaven, and all these parables are related to evangelism. If you can read Matthew chapter 13 at home, and there are 4 different parables that are found in this chapter. And finding those worthy ones who are chosen by God, who are prepared to receive the gospel that you are going to share. And so these worthy ones are the kind of ground that we are going to talk about. Their hearts are the gospel, and they bring manifold fruits. We will not read all the parables due to lack of time now, so you can just note down the references and read all these in your home. The first parable of the good soil is found in Matthew chapter 13, verse 8 to 23. Here we see the 4 types of soil in which the sower is spreading the seed. The seed is the word of God, and the 4 types of soil shows the heart condition of 4 types of people. And only that person whose heart's ground is worthy, or whose heart ground is fertile, will bear much fruit. And this exactly is the worthy person that the Bible was just now talking about. The worthy person whom the Lord has chosen already and prepared his heart that he may receive the gospel. He is that last fertile ground which will bear for much fruits. In the second parable of mustard seed, which is found in Matthew chapter 13, verses 31 to 33, in the second parable of mustard seed and yeast, we see that a mustard seed, although very small in size, but when it grows, it becomes a big tree and birds make nest in it. Similarly, that worthy one, you are the worthy one. Today, you are listening to the gospel. Your heart has been prepared by the Holy Spirit. I was the worthy one that day when I was listening to this gospel for the first time. I know my heart was prepared by the Holy Spirit of God, and I received this gospel. And now it is bearing forth much fruit through my life, through the lives of the other disciples who have received this gospel. So it says over here that the mustard seed, even though very small in size, but when it grows, it becomes a big tree and birds make nest in it. Similarly, that worthy one, no matter how insignificant or how unimportant he may be, but you may think that, oh, what can I do for the kingdom of God? Oh, I'm not so influential. I'm not such a good speaker. I'm not this, I'm not that. You may have 10 different reasons for telling yourself that you cannot do it. But I'm telling you, it is the Spirit of God that works through you once your heart is prepared, and once you receive that gospel. And then what do you become? And that worthy person, who, however insignificant he may seem to himself, then he becomes a source of salvation to many people. Just like the yeast, which is so small enough, but it is enough to make the whole dough sour. We know how yeast is able to influence the entire dough. So similar over here in the second parable, we learn about from the mustard seed and from the parable of the yeast, that even if you are so small, even if you regard yourself as so incompetent, yet I'm telling you that if you are that worthy one, you will bear forth much fruit because of the kind of ground that your heart has and which has been prepared and kept by the Spirit of God. The third parable we see, when a person finds a hidden treasure in a field, he goes and sells whatever he has to buy that field. And similarly, in the fourth parable, when a pearl merchant is looking for fine pearls, when he finds those pearls of great value, he just goes and he sells everything to get those pearls, to get that treasure. Now that pearl is like a worthy one who is a disciple. That pearl is you right now sitting over there. That pearl is me. That pearl may be anybody who's listening to me right now. The one who is prepared by the Spirit of God to receive this gospel of Jesus the Christ, Jesus the only Messiah, Jesus as the only Savior of the entire creation, Jesus as the only solution to all your problems.
to the problem of Satan's sin and separation from God. So, this worthy person, once we find him, he is like that pearl, he is like that treasure, he is that disciple, and we should give everything to this disciple. We should invest in this person, and he would then become like this hidden treasure, this mustard seed, and this yeast, which will bring forth much fruit for the kingdom of God. So by this, we have come on to this conclusion that the evangelism taught by Jesus is to find that worthy person who is prepared by God, right? So whatever ideas we had earlier about evangelism or how to evangelize, today the word of the Lord is telling us from Matthew chapter 13, we have seen how that worthy person is compared to the mustard seed, to the yeast, to the hidden treasure, to the pearl, and also something that was very important, which I just read about the instruction that Jesus gave to the 70 disciples and to the 12 disciples. That talks about the worthy person, and that talks about the evangelization that Jesus taught us. Now let's come to the third point, which is found in Matthew chapter. The third point is evangelism of the Bible. Evangelism of the Bible. Now, evangelism of the Bible is all about finding those people who receive revelation. And I'm giving you the biblical references. Let us read from Matthew chapter 11 and verse 27. You can open it with me right now. Matthew chapter 11 and verse 27, and I will read it out for you. It says over here, all things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal him. Now, what is the evangelism of the Bible? The evangelism of the Bible is to wait or to find or to look for those people who will receive the revelation. And over here we have seen that you cannot receive the gospel, you cannot receive the revelation unless the Son wills to give it to you, which I have just read out to you in 11:27, Matthew 11:27. It says very clearly, and the one to whom the Son wills to reveal himself. So unless the Son reveals himself to you as Jesus the Christ, you cannot receive the revelation. So however skilled I may be in my talking, however skilled I may be in in my worldly knowledge, however skilled I may be, that will be of no effect unless Jesus reveals that revelation onto the disciple, that revelation onto that worthy person to whom you are going to evangelize. Now let us look at Galatians chapter 1 and verse 12. You can take it out with me. Galatians chapter 1 and verse 12, it says, for I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. And over here we know that Apostle Paul is talking about this revelation, and he's very clearly mentioning it here, that I neither received it from man. That means you may receive this teaching from me right now, but unless the Lord reveals, unless the Lord gives you the revelation, unless the Spirit of God speaks to you today and makes and prepares your heart ground, you cannot receive it. And he says, Apostle Paul is talking here to Galatians, that I have neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus the Christ. So he's telling us that you cannot receive anything unless Jesus the Christ reveals it to you. And here we see that Apostle Paul was the chosen one. He was the worthy one who received this revelation that Jesus is the Christ from Jesus himself. So this is the evangelism of the Bible. This is how, these are the principles of the biblical evangelism that I'm talking about. Now let's look at
the testimony that Jesus is the Christ, which is found in, now in scriptures, we know that there were many people who testified that Jesus is the Christ. And we need to read the scriptures where these people testified about Jesus the Christ, and they were able to testify because this revelation was sent to them from heaven. From heaven. These revelations came to them through Jesus the Christ. Now let's look at the first person who talks about this testimony is John the Baptist. John the Baptist, and you can read it in John chapter 1, verses 7 and 8. Let's take out John chapter 1. And I'm just about to close in few minutes. But it's very important for us to know, at least to read some of the verses which talk about the testimony of Jesus the Christ, which came from these very prominent people who are found in the Bible. John the Baptist gives his testimony in John chapter 1, verse 7. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. And we know that John the Baptist, the prophet John the Baptist came. He was the one who was talking. He was clearing the way. He was preparing the way for Jesus the Christ, for Jesus the Messiah. So we know over here that he's testifying about the light, and Jesus is the light of the world. Let us also look at the testimony of the Samaritan woman, which is found in John chapter 4, verse 39. And it says, and many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified, he told me all that I ever did. Now, many people came to believe in the testimony of Jesus being the Christ, Jesus being the Messiah, because of the preaching that the Samaritan woman did in the town Samaria. You know, because she believed in him. First of all, she believed in him. And the revelation of him being the Messiah was first given to the Samaritan woman. And when she preached, people believed, because the people were already prepared in the town of Samaria. The people were already prepared and kept. They just needed one worthy person to preach the gospel to them. And you may be that one worthy person who would testify of Jesus being the Christ, Jesus being the Messiah. Let us also look at the testimony of Apostle John, which is found in John chapter 21, verse 24. I'm just reading one scripture, even though there are many scriptures which are here. But I'm just reading out because we do not have much time. So John chapter 21, verse 24, I'm reading it out to you. It says, this is the disciple who testifies of these things and wrote these things, and we know that his testimony is true. We know that the Apostle John was testifying about Jesus the Christ in this verse where I just read about it. And we look at the testimony of the apostles, which is found in Acts chapter 1, verse 22. All the apostles, they testified about Jesus being the Christ. Beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us, one of these must become a witness with us of his resurrection. Now they became the witness of Jesus being crucified, how Jesus took the burden of mankind, how Jesus, you know, he died for us and he resurrected. So these disciples were the witness. They were bearing testimony of Jesus being the Christ. And we see that Apostle Paul testified about Jesus being the Christ in Acts chapter 9, verse 22, and I will read it out for you. But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that Jesus is the Christ. What was he doing? He was proving that Jesus is the Christ. And you cannot prove him unless it has been revealed on you first. Unless you first have become the witness, unless you first have experienced him, tasted him, unless you first have believed in Jesus being your Savior, your Messiah, your Christ, the one that took away the sins of mankind. Let's look at the testimony of Apollos.
which is found in Acts chapter 18. So these are the different the witnesses that are given in the Bible who have spoken about Jesus being the Christ. Acts chapter 18 verse 28, and it says, "For he vigorously refuted the Jews publicly, showing from the scriptures that Jesus is the Christ." He was showing, Apollos was preaching, refuting the Jews publicly. He was putting them to shame. He was bringing the truth of Jesus being the only Christ, the only Messiah. He was the one that the Jews were waiting for all their lives. But when the light came into the world, they did not believe. So we needed witnesses even in the first church which is found in Acts of the Apostles. We needed those people bearing the witness of the truth. And so even today we need those disciples, and you are those disciples who are listening to this message today. You are the worthy ones. You are chosen by God. That is why you are here listening to it. And the revelation will prepare your heart ground. Amen. Amen. And let's look at the last one, the Bible itself. We read about it in John chapter 5 verse 39. John chapter 5 verse 39, and it says, "You search the scriptures." Now the Bible testifies about Jesus being the Christ. "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me." Over here, Jesus is talking about testify of me means testifying of Jesus being the Christ. Even in the scriptures, you're looking for eternal life in the scriptures. And the scripture itself is testifying about Jesus being the Christ. So here we see that all these early apostles and evangelists, even the Bible itself testified that Jesus is the Christ. And we need to truly believe in these testimonies. I have read it out to you specially so that you may believe that I'm not speaking any story over here, but I am quoting the references from the Bible, which tells you that there were people who spoke about Jesus being the Christ. And this was the first preaching that happened in the early church. And this is the same preaching that is required in this church in today's times. And this is the evangelism of Jesus being the Christ. And to just end with let us read Revelations chapter 22 verse 16. Revelations chapter 22 verse 16 says, "I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. I, Jesus, have sent my angel to testify to you." These people have been called as angels. These worthy ones are the angels. These worthy ones are the treasures. These are the pearls. And Jesus is saying, I have sent them to testify to you, to these things in the churches. Now, you may belong to different churches here, but the truth remains the same. Even if you may belong to whatever church you may belong, but the truth remains the same, and that is that Jesus is the Christ, the only Messiah, the Savior, the true prophet, the true king, the true priest, the perfect redemption that came through Jesus. And this is the gospel. So let me summarize today's lecture, that evangelism of the Bible is not about convincing or arguing with people or putting our own human efforts to preach the gospel, but to find those worthy ones who are already chosen and prepared by God to receive the revelation that Jesus is the Christ and truly believe it and live it, so that they may bring manifold fruits and reach to all the nations. So this is the evangelism of the Bible that I have spoken about today. And we just not only have to listen to it, but we have to also believe in it. We have to live it. We have to live Jesus as our Messiah, as our Christ in our lives. And if this revelation, this is my prayer this evening, that the revelation of Jesus being the Christ
Jesus being that true Messiah in your lives may dawn upon you today, this evening, in the name of Jesus the Christ, that you may become that fertile ground, that you may become that treasure, that you may bear forth much fruits for the kingdom of God. So thank you and God bless you. Amen. Thank you, sister, for this wonderful message. थैंक यू। और अब हम अपने उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए मैं इसको थोड़ा सा मैं बयान कर दूं कि आज के जो एवेंजलिज्म ऑफ द बाइबल, इसमें बड़ी ही जबरदस्त बात और बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपली जो है वो सिस्टर ने बयान किया है कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने जो है ब्रदर जगमोहन, आपका माइक जो है वो आपके पीछे शोर आ रहा है, इसलिए मैं आपका माइक म्यूट कर रही हूँ, ऑफ कर रही हूँ, तो प्लीज आप इसको आप अनम्यूट नहीं कीजिएगा प्लीज, इसको जरा म्यूट ही रहने दें क्योंकि वो पीछे आवाज आती है, बहुत ज्यादा शोर है शायद किसी चीज का। तो आज का जो है उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम जो है खुदा यीशु मसीह की मुनादी जो है वो दुनिया में कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने किस तरह से मुनादी की और खुदा यीशु मसीह ने जब अपने डिसाइपल्स को चुना, शागिर्दों को चुना, तो उन्होंने किस तरह से बड़ी ही सादा तरीके से उन्होंने उनको दावत दी कि मेरे पीछे हो लो। हम सब ये जानते हैं कि जब उन्होंने पतरस और उसके भाई इंद्रियास को चुना और इस तरह से जब उन्होंने यूहन्ना को चुना और उसके भाई याकूब को चुना, और इसी तरह से हालांकि वो मतलब जो है वो तो अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ उनसे ये कहा कि मेरे पीछे हो लो, जैसे कि मत्ती को कहा और फिलिप्स को कहा। लेकिन यहाँ पर जो बात सबसे काबिल गौर बात है कि उनके दिलों को पहले से ही पाखरू ने तैयार किया हुआ था कि जब उनको ये दावत मिलेगी, जब उनको ये इन्विटेशन मिलेगी, तो वो खुदा यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे। तो जो गॉस्पेल की प्रीचिंग है और डिसाइपल्स बनाना जो है इतना ही सिंपल है, जैसे कि सिस्टर ने बताया कि ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। हमें सिर्फ लोगों को ये बताना है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो मसीहा है और खुदा यीशु मसीह की बादशाही की हमें प्रीचिंग करनी है। हमें अब प्रीचिंग क्या करनी है कि खुदा यीशु मसीह की बादशाहत करीब है। खुदा यीशु मसीह की बादशाहत का मतलब क्या है? जैसे कि सिस्टर ने बताया कि खुदा यीशु मसीह ने जो है मोअज़ात के जरिए, अपने कामों के जरिए जो है वो बताया कि खुदा की बादशाही क्या है। और हम सब ये जानते हैं कि जब वो खुदा यीशु मसीह को लोग बातें करते थे तो खुदा यीशु मसीह ने एक बात बड़ी अच्छी वहां पर बात कही थी कि हिकमत अपने कामों से रास्तबाज साबित हुई। तो खुदा यीशु मसीह के अंदर जो पाकरू की हिकमत थी, जो खुदा के उनके अंदर जो कुदरत थी, उन्होंने अपने कामों से साबित किया कि मैं ही मसीहा हूँ, मैं ही क्राइस्ट हूँ, मैं ही वो हूँ। और उनकी बातों से लोग जो है वो हैरान हो जाते थे, उनकी हिकमत से हैरान हो जाते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि मतलब हिकमत अपने कामों से रास्तबाज साबित होती है। इसलिए दुनिया बहुत कुछ कहती है, तो खुदा यीशु मसीह ने जो है खुदा की बादशाही को कैसे दुनिया में लेकर आए। अब खुदा की बादशाही का मतलब क्या है? जैसे कि यूहन्ना के शागिर्द जो है, यूहन्ना इस्तबागी भी हम देखते हैं कि वो भी जो है खुदा यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा वो उस शक में मुब्तला हो गया और उसने अपने शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह के पास भेजा। तो खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा कि उससे जाके कहो कि मुर्दे जिंदा होते हैं और अंधे जो हैं वो बिनाई पाते हैं और लंगड़े चलते हैं, और ऐसी बहुत सारे वो तमाम मौजज़ात जो हैं वो उसको जाके बताओ कि ये सब कुछ काम हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि खुदा की बादशाही दुनिया में आ चुकी है और खुदा की बादशाही खुदा का बेटा लेकर आता है। अब बादशाही का मतलब क्या है? बादशाही कि जब खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है वो हमें अबलीस के शिकंजे से छुड़ाता है, जब वो हमें अबलीस से छुड़ाकर जो है वो हमें अपने उसमें लेकर आता है, तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। और जैसे कि सिस्टर ने बताया कि हमारा काम सिर्फ प्रीचिंग करना है, हमारा काम जो है खुदा के कलाम को और इस गॉस्पेल को दुनिया को देना है। आगे काम करना खुदा का काम है और खुदा के रूह का काम है, और खुदा का रूह जो है वो दिलों को पहले से ही तैयार कर देता है। और हम सब ये जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो असर रखता है, और जहां पर भी हम खुदा के कलाम का बीज बोते हैं तो वो जिन जिन जरखेज जमीनों पर गिरता है वहां पर वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाता है। और हम सब ये जानते हैं कि जमीन जो है वो पाकरू पहले से ही तैयार कर चुका होता है, और जिनको खुदा ने पहले से ही चुन लिया है उनको खुदा ने
रास्तबाजी भी बख्शता है, खुदा उनको जलाल भी बख्शता है, और खुदा उनको जो है वो तैयार भी करता है। इसलिए हमारा काम जो है वो सिंपली ये मैसेज देना है कि जीसस इज द क्राइस्ट, और खुदा यीशु मसीह की बादशाहत की मुनादी करनी है, उसकी प्रीचिंग करनी है, ताकि लोग जो हैं, जो पहले से ही तैयार हैं, जिनको पहले से ही तैयार किया गया है, वो हमारे साथ जरूर इस काम में इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा जो है रेवलेशन के बारे में कि जब तक हमें खुदा की तरफ से ये मुकाशवा न दिया जाए, कोई भी इंसान इसको अपनी तौर से पा नहीं सकता। ये मुकाशवा हमें दिया गया है, हमें पहचान दी गई है, तो इसलिए कि उसने हमें चुना है, इसलिए कि उसने हम पर ये खोला है। अदरवाइज हम नहीं इसको हासिल कर सकते थे, हम नहीं इस मुकाशवे को पा सकते थे। और हम सब ये जानते हैं कि हाँ, आज एक सवाल हमारे जहन में आता है कि दुनिया में इतनी प्रीचिंग होती है, इतनी बाइबल जो है, बाइबल प्रीचर्स हैं, सब कुछ है, फिर भी दुनिया अभी तक खुदा यीशु मसीह से नावाकिफ क्यों है? अभी तक खुदा यीशु मसीह को नहीं पहचानती, अभी तक वो खुदा यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती, अभी तक वो खुदा यीशु मसीह के रेवलेशन उन पर क्यों नहीं खुली? इसलिए कि हो सकता है कि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन पर अभी तक ये मुकाशवा खुला ही नहीं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन तक अभी ये मुकाशवा पहुंचा ही नहीं, या जिन तक ये प्रीचिंग अभी तक की ही नहीं गई। तो मेरे अजीजों, हालांकि हम जब जो ये मुकाशवा को पा चुके हैं, हम ये सोचते हैं कि ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इस बात को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बात पाक रूह के बगैर हम समझ नहीं सकते। इसलिए जो लोग इसको समझ नहीं पाए अभी तक, उनके अंदर खुदा का रूह नहीं है, या खुदा के रूह ने अभी तक उन पर ये मुकाशवा नहीं खोला। तो हमें ये काम करना है, हमें इसकी प्रीचिंग करनी है। आगे खुदा का काम है कि वो अपने लोगों को कैसे तैयार करता है, और जिसको उसने चुना है वो उनको हमारे साथ कर देगा, और वो मुकाशवा अपना उन पर खोलेगा। इसके बाद जो है सिस्टर ने जो चौथा पॉइंट है वो टेस्टिमनी है, कि बाइबल जो है इस बात की गवाही देती है, और बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बाइबल खुद जो है एक गवाही है कि खुदा यीशु मसीह की गवाही देती है। जैसे कि यूहन्ना इस्तबागी ने खुदा यीशु मसीह के बारे में गवाही दी, इस तरह से यूहन्ना जो है यूहन्ना रसूल जो शागिर्द है वो गवाही देता है। इस तरह से मतलब बाइबल, सारी बाइबल में जो है ये बात है हमें मिलती है कि खुदा यीशु मसीह ही मसीह है, जीसस इज द क्राइस्ट, और वही मसीहा है, वही हमारे लिए आया, उसे ही भेजा गया, उसे ही मसा किया गया कि हम सबके गुनाहों की खातिर वो अपनी जान कुर्बान करे, और हमें वो खुदा की बादशाही में दाखिल करे। हम सब जो उस पर ईमान लाते हैं, हम उसकी बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। हम इस बादशाही का मजा जब चख लेते हैं, तो मेरे अजीजों, ये एक ऐसा इत्मीनान, एक ऐसी शादमानी है कि जैसे वो हम ये देखते हैं कि सामरी औरत जो थी, जब उसने वो मजा चख लिया, तो उस वो भागी भागी गांव में गई कि देखो मुझे मसीहा मिल गया, देखो मैंने उस शख्स को पा लिया। इसके बारे में नबियों ने जो है वो पेशन गोई की थी, आओ मेरे साथ देखो। जब हम ये मुकाशवा पा लेते हैं, जब ये बादशाह का इत्मीनान और तसल्ली हमारे अंदर आ जाती है, तो हम खुशी से भर जाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे वो तमाम लोग जो अभी भी अंधेरे में हैं, तारीकी में हैं, हम उन तक ये मुकाशवा पहुंचाएं, हम उन तक ये बात पहुंचाएं कि तारीकी से निकल कर हम खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकते हैं, सिर्फ एक खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से कि जीसस जो है वही हमारा मसीहा है, उसे ही मसा किया गया है ताकि वो अपनी जान कुर्बान करे। उस मोहब्बत से, उस कुर्बानी से हम छुड़ाए जा सकते हैं। हम ये जानते हैं कि हम जब अपने आप को खाली कर देते हैं, तो हम इस मुकाशवे को पा लेते हैं। अपने आप को खाली करना बड़ा जरूरी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। थैंक यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। और अब हम हमारे साथ हैं ब्रदर जगमोहन, आप दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हिंदी में बोलो। हिंदी में? वो पंजाबी भी बोलते हैं। बोलते पंजाबी हैं। ब्रदर जगमोहन, अगर आप हमें सुन रहे हैं, अगर तुसी ਸਾਨੂੰ सुन रहे हो तो तुसी अपना माइक प्लीज ऑन करो, माइक ऑन करके जरा प्रार्थना करो साडे नाल पाजी।
अच्छा, मेरा ख्याल है वो हमें जी उन्होंने हेलो। सुन लिया। जी जी भाई, आप इस कलाम के लिए, आज के इस मैसेज के लिए आज आप दुआ करेंगे। दुआ करते हैं परमेश्वर दे विच, प्रभु यीशु मसीह के नाम विच। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह जी। अज का वचन जो परमेश्वर जी अपने वालों दिता गया मेरे पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्ग के राज तो दिता गया मेरे पिता प्रभु। तू ही देने वाला परमेश्वर हाँ प्रभु। साडे मना दिलों दे विच और साडी बुद्धि दे विच तैं अपना वचन बसाया मेरे परमेश्वर। तैं अपने द्वारा तैं साडे विच बोलिया और सुनाया पिता परमेश्वर। असीं सुनिया तेरे वचन नूं पिता, तेरे वचन नूं सुन के असीं अपने मन विच, अपने दिल विच, अपनी बुद्धि विच रखदे हां पिता परमेश्वर जी। असीं तेरे वचन नूं अपने विच बसाउंदे हां प्रभु, अपने विच रखदे हां पिता परमेश्वर। इस वचन उत्ते, तेरे दिते गए वचन उत्ते असीं अमल करके पिता परमेश्वर जी तेरे न्याय के समय अनुसार पिता परमेश्वर तेरे अगे खलो सकीए मेरे प्रभु। और दया करी पिता, रहम करी, रहमता दा बानिया प्रभु, आद और अंत है प्रभु, राजों का राजा है प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। असी तेरे बेटे बेटियां पिता परमेश्वर। सानू होर भी अकल ज्ञान बुद्ध समझ बख्शी पिता परमेश्वर। तेरी स्वर्गी अकल ज्ञान बुद्ध समझ नाल पिता परमेश्वर जी साडे सानू अपने अकल ज्ञान बुद्ध समझ दे के पिता परमेश्वर अगे ਵਧਾਈ पिता परमेश्वर अपने विच प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा ही साडे विच वास करे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा ही साडे विच, तेरी होली स्पिरिट ही साडे विच कार्य करे पिता परमेश्वर। तेरे नाम की बड़ाई करिए प्रभु, तेरे नाम की महिमा करिए प्रभु, तेरे नाम की उस करिए परमेश्वर जी। तुहाडा लाख लाख शुक्रगुजार हाँ प्रभु, तुहाडी लाख लाख महिमा करदा हाँ। जो भी भैन भाई अज दे समय दे विच पिता परमेश्वर जी तेरे नाम विच पिता परमेश्वर विच जूम के द्वारा पिता परमेश्वर इकट्ठे होया पिता परमेश्वर जी, इस जूम के द्वारा इकट्ठे होया प्रभु। उन्होंने आशीष से बरकत दें पिता परमेश्वर। उन्होंने बच्चों को ब्लैस करें पिता परमेश्वर। आशीष से बरकत दें पिता परमेश्वर जी। सब आशीष से बरकत तेरे स्वर्ग वालों पिता परमेश्वर तू अपने वालों दिना है पिता। तो स्वर्गी पिता है पिता परमेश्वर, जो तेरी अखियां जो ने धरती उत्ते लगियां रहिंदियां ने प्रभु, ते और तेरे वालों ही पिता परमेश्वर सानू धरती उत्ते देखा जाता। जमीन और समान जो धरती ते बनो स्वर्ग विच बन्निया जाएगा, तेरे वचन विच लिखा है प्रभु। असीं जो धरती ते प्रेर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, साडी प्रार्थना नूं कबूल करी प्रभु। आप दी हजूरी विच का शामिल करी पिता परमेश्वर। आप दी हजूरी विच साडी हाजरी नूं कबूल करी पिता। ना तेरा धन्यवाद करदा हां प्रभु। तू आत्मक पिता है पिता परमेश्वर, साडा जीसस पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद प्रभु। तेनों पिता परमेश्वर जी असीं मनो तलों पिता परमेश्वर जी अपने द्वारा पिता प्रेम करते हैं प्रभु। तू सानू प्रेम कर पिता परमेश्वर, प्यार कर प्रभु, अपने विच अगे बढ़ा पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करते रहिए, तेरे नाम की उस्त करते रहिए प्रभु। तेरे नाम विच अगे बढ़ते जाइए प्रभु। तू दया करने वाला परमेश्वर हाँ प्रभु, रहम करने वाला प्रभु हाँ प्रभु, प्रभुआं दा प्रभु हाँ, राजा दा राजा है पिता। तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हाँ प्रभु। सब नूं ब्लैस करी पिता परमेश्वर। जिन्ने भी तेरे नाम विच पिता परमेश्वर लोक पिता परमेश्वर के पिता परमेश्वर बेटे बेटियां इकट्ठे होए हैं पिता परमेश्वर जी, उन्होंने सब नूं ब्लैस करी, उन्होंने परिवारां नूं ब्लैस करी प्रभु। होर भी बुद्धि नूं खोली पिता परमेश्वर, जो बुद्धि तेरे वालों स्वर्ग वालों है पिता परमेश्वर। तू ही अनुसार अपनी बुद्धि नाल ही पिता परमेश्वर अपने वचनां दे द्वारा, अपनी आशीष दे द्वारा, अपनी व्यवस्था के द्वारा, अपने कानूनां के द्वारा सानू अगे बढ़ाना है पिता परमेश्वर। आप सानू अगे चलाना है प्रभु। मैं असीं तेरे नाम की बड़ाई करिए प्रभु, तेरे नाम की महिमा करिए पिता परमेश्वर। होर भी अपने वालों प्रेर प्रार्थना करनी सानू सिखाई मेरे पिता। तेरे नाम की महिमा करते रहिए, तेरे नाम की उस करते रहिए, तेरे नाम की बड़ाई करते रहिए प्रभु जी। तेरा लाख लाख शुक्रगुजार पिता। तेरा आत्मक पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा ही साडे जीवन विच वास करे पिता। तेरा पवित्र आत्मा ही साडे जीवन विच कार्य करे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा ही सानू पहचान करे प्रभु। तुहाडे वचन तुसीं मैं डूंगे भेतां दी कुंजी हाँ। तेरे भेत जो पिता परमेश्वर अपने वालों जो उपदेश पिता परमेश्वर अपने द्वारा वचनां दे द्वारा दिते पिता परमेश्वर,
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਦ और अंत है प्रभु, राजों का राजा है पिता परमेश्वर। उसके बाद तेरे उत्ते तो वड्डी आस रखते हैं पिता, तू आने वाला है प्रभु, तेरे उत्ते वड्डे विश्वास करते हैं प्रभु, तू साडे विच आने वाला है प्रभु। ते पिता परमेश्वर तेरे आमद दे दिन ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਾ ਠਹਿਰੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਵਚਨ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਤੂੰ अमन और शांति है पिता परमेश्वर, सदीपक जीवन तेरा है पिता परमेश्वर। तेरे द्वारा पिता परमेश्वर सानू शांति और दयालगी, रहम, प्यार, संयम सब पिता परमेश्वर तेरे वालों है प्रभु। वो सब सानू मिलता रहे प्रभु, तेरे प्रेम प्यार विच बने रहिए प्रभु। बाकी समा पिता जी मैं तेरे हत्थां विच देना हाँ प्रभु। रखिया करी, सुरखिया करी प्रभु, असीस दे, आनंद दे, खुशी दे पिता परमेश्वर। सब नू ब्लैस करी पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन Amen. Amen. ब्रदर थोड़ा बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बरकत दे और खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा अपने अमान च रखे और खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरह अपने नाम दी जलाल इस्तेमाल करता रहे। अब हम चलते हैं फीडबैक की तरफ। वी विल सिस्टर नुसरत। Thank you for this opportunity. I like to say sorry that I carried away all the times, but it is like, it's for me, my spirit is thirsty for, my soul is thirsty for the Lord. So wherever the people is talking about the Lord, I get ignited and then I carried away. So Sister Vandana, it was a very wonderful message. The purpose is here to bless us. We are here to bless each other and bless us all and bless the others and bless the nations. In the mighty name of Lord Jesus Christ, the Father will open their spiritual eyes so they can acknowledge their Messiah and they can have encountered their Messiah. So it was a wonderful message, the gospel of the Lord Jesus Christ, for the kingdom of God. Like you said, the kingdom is within Jesus. So I agree with you that Jesus is the one who inaugurated the kingdom of God, because when he came right away, he said, repent and turn away, the kingdom of God is at hand. So when he was going back to the Father, he told his disciples in the Mark 16:15 that he said to them, go into the world and sorry, my internet connection is slow because I'm very far from the modem. So I was reading, sorry, hello? I was reading the Mark chapter 16 verse 15, that he given a commandment to his disciple, go in the world and preach the gospels to the nations, to all creations, all nations.
and the other one, his great commission, that was his great commission, that you go in the world and make the disciples and baptize them in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, and teach by teaching them to everything that I have commanded you. I am with you always to the every end of the age. So the Gospels mean is like a proclamation. जैसे Paul ने First Corinthians में कहा कि Gospels mean like it's like a Greek word evangelions, which is mean the gospel. Gospel mean a good news. Good news mean खुशखबरी. खुशखबरी क्या है कि यीशु, जैसे आपने बताया कि यीशु ही मसाया है, यीशु ही बादशाह, खुदावन की बादशाह का king. He is the king of kingdom of the God, and he's the one who started the kingdom, and he is the God himself. Because in the kingdom of God, why is needed the kingdom of God? Because when nation of Israel was released from from the captivity of the Pharaoh, and they were about to enter into the nation, into the promised land. So God, we all know that Israel was carried away all the time. They were always like distracted from the nation of, from the other nation, and they like to copy the other nation. So God told Moses, I know that they are rejecting me as their king, and I want you to, if they ask, give them a king. So God actually, from there, the God wanted them to worship him as a king, because he is the king of everything. But the nation of Israel was looking for the worldly king. So that is why Jesus, Father, the purpose was to reconcile the mankind. He came in the body, like as Jesus Christ, to bring us all back into the kingdom of God and be the king of us, so being a Messiah. That is the reason he was here. So preaching God's good news is the proclamation. जैसे Corinthians में उसमें कहा है कि 1 Corinthians chapter 15 verse 11, the gospel is this, the proclamation, the glory of the Christ, rather than something we proclaim about ourselves. So whatever they were proclaiming themselves, the gospel, good news, अच्छी खुशखबरी बशारत यही है कि यीशु मसीह ही मसीहा है, यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह ही बादशाह है. और मतलब कि we have to preach the world to the Jesus Christ, every creation onto the earth, being his disciple onto the earth, to preach the Jesus. The gospel means preaching the Jesus Christ. So preaching the Jesus to the world and bring the Jesus to the world, that he is all in all, everything to us. And he is the center of our life, and he is the head of the church. So the church means, where the church is, that means there's the kingdom of God. So since we are within a God, then we carry the Jesus within us, then we are the kingdom of God. So this is what the kingdom of God to me. So overall, your message, your lecture was very well, was played out, and it was wonderful. And God bless you all, and God bless everybody out there who will be hearing today. Thank you. Thank you, Sister Nusrat. Now we have Brother Sania Palka, and brother, please give your feedback. Yeah, absolutely, it is right. Actually, जब मतलब इस धरती पर इंसान क्या करते थे ना, जितना मतलब सही तरीका से भी हम जानते थे और सुनते थे भी यीशु मसीह से बहुत कुछ, लेकिन उसी टाइम पे क्या करते थे, जैसे अभी ना हमारा नसरत मैम ने और सिस्टर ने बोली कि हमेशा वो लोग को वही उम्मीद में थे कि हमारे लिए ये अर्थ का एक राजा है, लेकिन उनको सही तरीका से मतलब ट्रूली उनको मालूम नहीं था कि यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है. तो और भी एक ये बात है कि यीशु मसीह भी जब इस धरती में थे, सिस्टर ने बोलती थी कि हमेशा जब भी कुछ भी प्रीचिंग करने के लिए या कुछ भी बोलने के लिए चाहते थे, तो वो अर्थ का
एग्जाम्पल देकर हेवनली मीनिंग पर उन्होंने हमें हमेशा बात करते थे। यही हमारा एक मतलब इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि हम उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, और हम क्या करते थे कि हम नेग्लेक्ट होके ना उसको समझ में मतलब समझने में थोड़ा दिक्कत भी होता था हमें। लेकिन आज का जमाना में, जैसे कि आजकल का जो देश चल रहा है, लोगों का पास या तो जो आदमी का पास हम पहुंचना है यीशु मसीह का वर्ड को लेके, या यीशु मसीह का जो भी मतलब महत्वपूर्ण चीज है हमारा पास, तो उसको लेके, तो ये आजकल हमारे लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी जैसे कि हमारा यीशु मसीह ने मतलब एवेंजलिकल वर्क किए थे इस धरती पर, आज हमें भी ना तो क्या होना चाहिए, पहले उनका ऊपर हमें पूरी तरीके से यकीन करना चाहिए और उनको हम पूरी तरीके से विश्वास करना चाहिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी हमें उसको देना चाहिए। जब वो हमारा हाथ को पकड़ेगा और वो जब हमारे सामने होंगे, तो चाहे कोई भी देश हो या कोई भी जगह हो हमारे लिए, चाहे कितना भी मुश्किल हो, तो वो सब कुछ हमारे लिए इजी प्रोसेस हो जाएगा। ये मेरे यकीन है और ये मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारा खुदा वो है जो कि इस धरती पर हमें कुछ भी हो, जब मुश्किल होता है तो वो मुश्किल को ना आसान बनाने वाला खुदा है हमारा, और उनका पास क्या नहीं है, सब कुछ है। तो इसीलिए चाहे जो कुछ भी हो हमारा जिंदगी में, जब हम एवेंजलिकल वर्क करने जा रहे हैं या जब हम गॉस्पेल को लेके प्रीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का माहौल हो, चाहे वो किसी तरह का सिचुएशन भी हो, तो हमें नहीं डरना चाहिए। लेकिन हम क्या करना चाहिए, पहले यीशु मसीह को हम पहचानना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारा क्राइस्ट है और वो ही हमारा एक सही खुदा है। तो उसको हम सामने रख के अगर उसका साथ हम जाएंगे, तो उसका ब्लेसिंग का साथ और उसका मतलब जो नॉलेज है, तो जो हम गाइड करके देगा, तो उसी नॉलेज से हम जब इस्तेमाल होंगे, जरूर आज का जमाने में लोग भी यीशु मसीह को पहचानेंगे और यीशु मसीह के पास आएंगे। तो थैंक यू सिस्टर फॉर योर wonderful message and for your wonderful thought that you have delivered this evening. May God bless you. Okay, Brother Ravi. Thank you. Thank you, Sister Vandana, for clear lecture about the evangelism of the Bible. And, now the evangelism is mixed with the human thoughts and culture, and according to their system, they are making the evangelism. But God has given a specific evangelism through the Bible to find the worthy one and preach. And when he was there, he preached the evangelism about himself. Always he is trying to testify that he is the Messiah. And if you see Luke chapter 24:44 also, he is preaching the disciples whenever the time that who he is and what about him was written on the Bible in the Old Testaments. He is proving that this is written for me, this is written for me, this is written for me. So he is proving that he is the Messiah. So we are also chosen by the God, and we are also worthy ones and angels to testify that Jesus is the Christ. It's a wonderful thing. And we are also here to prove that this Jesus is the Messiah. And thank you, Sister Nusrat, a long feedback you have given, wonderful. Yeshu, Masih, everything. Yes, because why is everything? Because he is the Messiah. Yeshu, Messiah. And thank you for your understanding and very clear lecture. Thank you for this platform. And this is a wonderful lecture. And through this, this is the reason why we are here, to find the worthy one. The evangelism of the Bible is nothing but to find the worthy one, and we all together complete the world evangelization in nowadays. Thank you for everyone. Thank you.
Thank you, brother, because we know that Father is preparing us in our Lord Jesus Christ for the evangelism. And now, Sister Mandana, if you want to say something, please. Yes, for me, this especially has been a very, very touching lecture of one of the lectures of all the lectures that I have received. जितने भी lectures मैंने सीखे यहाँ पर, सच में ये सवाल बड़ा रहता था कि इवेंजलाइज हर कोई अपने ही तरीके से कर रहा है, और ये ज्ञान मुझे बिल्कुल भी नहीं था. I didn't have this right understanding of the true gospel. People may have understanding of the gospel. People may be preaching so many different kinds of gospel, but that may not be the true gospel. So first of all, we have to know what is the true gospel. And Jesus himself had to come and preach about himself. He was preaching about himself. John the Baptist was preaching about him. The Acts of the first church, all the disciples of Jesus the Christ were talking about Jesus as the Christ. And yet I would just think sometimes that for so many years I have been the daughter of a priest, and yet I did not know all this. Everything was written in the Bible, but I did not have a clear understanding of it. But the way it has been taught to us through Mission World Evangelism, now each segment is so clear. It is so very well deeply rooted. Now the more we are preaching outside, the more it is becoming clearer to us, first of all. And it was no doubt revealed by the Spirit of God. Until and unless the Spirit of God does this work in us along with the evangelist, it can never be fruitful. So I want to give all glory and honor to the Spirit of God who is present here also this evening. And he is the one, who is working alongside this evangelism. It is the Spirit of God who himself testifies of Jesus as the Christ. And he is also testifying in these times through so many things. So I have been so much touched by Mission World Evangelism and the detailed teaching that they are giving. And especially, these references, they were in the Bible. These references are like a treasure to me. They are so very well knit together, so very well connected. And they bring about the fact so beautifully. Nobody can deny it. Now I don't need to convince people by my words. My words have no power, but the word of God has power. And now I have the sound proof through the word of God. So I was truly blessed. And I'm so blessed that Dr. Ravi chose this lecture for me. And, I'm telling you seriously, that I was not so very well prepared, but I just asked the Holy Spirit to help me. I said, Holy Spirit of God, you have to help me. You have to bring about everything. You have to bring about this fact out beautifully. It is not by words of, it is not by words of wisdom. Just like Apostle Paul says that I do not come to you with those words, with those sound words, sound teaching and all that. But I just come with a very clear understanding of Jesus being the Christ. So our words may not be that profound, our words may sound, the lesson itself may sound very simple. Like Jesus, when he spoke to the disciples, he said, come follow me. And I used to wonder, what was it that they just left everything. They left their profession. They left everything. They just followed Jesus. That was the impact of the Spirit of God. So this evangelism of the Bible is done in total coordination with the Spirit of God. And even now, he is bearing witness to Jesus being the Christ through our lives. So thank you so much. I'm blessed. And I'm also so blessed that I am a part of this platform wherein I have met Sister Nasreen, Sister Nusrat, Brother Sania, Brother Jagmohan, and Dr. Ravi. Obviously, he's a blessing to us. तो आप सभी से मिलकर जो है बड़ी खुशी हुई है. और एकदम हम सभी लोग एक मन के लोग हैं. एक मन के लोग एक दूसरे को समझ सकते. ज्यादा शब्द बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आत्मा एक ही है सबके अंदर. सो यही आत्मा है जो मसीह की गवाही देता है कि वही क्रिस्ट है. सो थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू सिस्टर वंदना. बेशक मैं इसमें थोड़ा सा बस बता दूं कि जब मतलब हमने स्टार्ट की, मैंने जब खिदमत स्टार्ट की, तो जब हमारा जो था खुदा के कलाम की जो सच्चाइयां हैं, ट्रूथ्स हैं, हमारा ये था कि हम लोगों तक पहुंचाएं. और हमने यूट्यूब चैनल भी इसीलिए स्टार्ट किया था.
तो मैं अक्सर खुदा से ये सवाल करती थी कि खुदावंद, जो लोग दूसरी तरह से मतलब मैसेजेस डिलीवर करते हैं, जो दूसरी तरह से बताते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कि खुदा के मौजज़ात मिरेकल्स पे बात करते हैं, इस तरह से बात करते हैं, तो मतलब मैं क्यों नहीं करती हूँ, मतलब मैं इस तरह से क्यों करती हूँ। तो हमारे साथ एक लेडी थी, तो वो उन्होंने कहा कि आपको खुदा ने टीचिंग के लिए चुना कि आप बाइबल टीचर हो और मतलब बाइबल की सकते हैं। अब ये बात हमें समझ आई है, मुझे समझ आई कि खुदा हमें क्यों आगे लेके चल रहा था, खुदा मुझे मतलब मेरी तरबियत क्यों इस तरह से कर रहा था, मुझे क्यों इस तरह से सिखा रहा है। हमें जो ये चीजें जो लोग नहीं सिखाते, और बहुत सारे बहन भाइयों ने जब हमारे मैसेजेस हमारे सुनते हैं, तो वो ये बात करते हैं कि वो बातें हमें सुनने को मिलती हैं जो हमें दूसरे पास्टर्स नहीं बताते, या हमें आज तक वो बातें हमें नहीं बताई गई। तो अब ये वाकई कि अब हमारी एक सिमत है, एक डायरेक्शन है कि हमें अपनी खिदमत को, अपनी सर्विस को हमें किस तरफ को लेके जाना है, हमें जो है वो किस तरह से इसको जो है वो हमें करना है। और हमने अपनी जो खुदावन ने हमें ये सिखाया और जो बताया है कि वाकई हमें जो है, हमें उस तरह से नहीं चलना जिस तरह से दुनिया चलती है, या जिस तरह से जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स हैं, जो सिर्फ जो वर्थली जो ब्लेसिंग्स के लिए या सिर्फ पैसे के लिए या उसके लिए जो लोगों को मतलब करते हैं, हमें जो सच्चाइयां हैं वो लोगों तक पहुंचानी है। तो खुदा हम सबको बरकत दे। और मुझे ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप इंडिया से हमारे साथ ज्वाइन है, और मैं इस बात से, ये बात गवाही है कि खुदा इंडिया के लोगों में कितना काम कर रहा है, और खुदा ने इंडिया के लोगों को कितना ब्लेस किया है कि खुदा ने उनको जो अपने उसके लिए तैयार कर रहा है। तो मैं तमाम इंडियन स्पीचर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो अपना वाकई वक्त देते हैं, डिवोशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हालांकि हमें बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो ये खुदावन की तारीफ हो कि उसने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया। तो एक हिम्मत, एक डायरेक्शन हमें मिली है खिदमत की कि हमने किस तरफ को जाना है और क्या खिदमत हमने करनी है। तो चलें हम दुआ करते हैं। आखिरी दुआ में जो है, अगर कौन दुआ करना चाहेगा, तो अगर कोई अपनी मर्जी से दुआ करना चाहता है आखिरी प्रेयर, तो वो कर सकते हैं। Can I pray? Yes. So all of you are based in Canada, right? Nasreen, Sister Nasreen, Sister Nusrat, you all are based in Canada. Actually, I'm from USA. She is from USA. I am in Canada. You're in Canada. Okay. So I have to pray about USA, that maybe, evangelized through Sister Nusrat, and Canada be evangelized through Sister Nasreen. And बाकी जो ब्रदर सानिया है वो तो इंडिया से ही है, और ब्रदर जगमोहन सिंह मोहना भी इंडिया से है। सो आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। पिता, हृदय से शुक्रगुजारी चढ़ाती हूँ परमेश्वर पिता, इस प्रकाशन के लिए जो बहुतों के ऊपर प्रकट नहीं हुआ, परंतु आपने हमारे ऊपर प्रकट किया कि प्रभु आपने इस संसार में से हमें चुन लिया, आपने हमें वो वर्दी वंश के जैसा रखा परमेश्वर पिता, आपने हमें बचा कर रखा प्रभु जी, आपने हमें डिफाइल नहीं होने दिया, करप्ट नहीं होने दिया, आपने संसार से हमारी रक्षा करी परमेश्वर पिता, और अपने पुत्र यीशु के उस ज्ञान में आने के लिए मेरे पिता आपने हमें बचा कर रखा उस इविल वन से प्रभु, उस शैतान से परमेश्वर, उसकी साजिशों से परमेश्वर पिता। और आज आपने हमें उस समय पर उस स्थान पर पहुंचाया परमेश्वर पिता कि हम आपकी उस प्रभु उद्धार की उस समझ को प्राप्त करें जो आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से भेजी गई परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आज हम प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर पिता, मैं कनाडा के लिए प्रभु जी, मैं सिस्टर नसरीन के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी बेटी को चुन के रखा परमेश्वर पिता इस समय के लिए परमेश्वर पिता, कि वो इवेंजलाइज करे आपके गॉस्पेल को परमेश्वर पिता, वो प्रभु जी इसकी गहराइयों को समझे परमेश्वर पिता। यीशु ही मसीह है, वही उद्धार करता है परमेश्वर पिता।
ये हमने कहा जरूर है, परंतु इसे जीने के लिए जो हमें लगता है वो है आपका प्रकाशन परमेश्वर पिता। आज मैं मानती हूँ प्रभु कि आप उनकी समझ को ऐसा खोले परमेश्वर पिता, उनकी आत्मिक समझ को आज आप खोल दे परमेश्वर पिता, क्योंकि यदि हमें स्वर्ग से न दिया जाए तो इंसान कुछ भी रिसीव नहीं कर सकता परमेश्वर पिता। आज आपके स्वर्ग के दरवाजों को खोल के परमेश्वर पिता आप अपनी बेटी की समझ को ऐसा प्रकाशमान करे परमेश्वर पिता कि प्रभु जी वो इस समझ में इतनी बलवंत और दृढ़ हो जाए परमेश्वर पिता कि आपकी बेटी परमेश्वर पिता एक ऐसी दृढ़ नींव पर परमेश्वर पिता लोगों की समझ को खोलने का कारण हो जाए परमेश्वर पिता। कनाडा के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, यहाँ पर आपके चुने गए जो वर्दी वंस हैं प्रभु वो कनेक्ट हो सिस्टर नसरीन के साथ में, सिस्टर नसरीन के द्वारा से परमेश्वर पिता आप लोगों में प्रभु जी इस इवेंजलिज्म के लिए तैयारी करें परमेश्वर, उनके हृदयों में उस आग को लगाएं पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे पवित्र आत्मा। आज सिस्टर नसरीन के जीवन में, सिस्टर नुसरत के जीवन में परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में भाई सानिया पलक के जीवन में परमेश्वर पिता, और जितने भी आज यहाँ मौजूद थे मेरे पिता, अपनी आत्मा की बेदारी आप हमारे अंदर भेजें, और आपकी बेदारी प्रभु हमारी समझ के खुलने से आती है परमेश्वर पिता। आज मानती हूँ कि धर्म का जो कुछ भी हमारे अंदर पड़ा है परमेश्वर पिता, धर्म की वो बातें परमेश्वर पिता जो सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा करती हैं, परंतु परमेश्वर पिता आज मैं मानती हूँ आपका प्रकाशन हमारे जीवन को बदल दे परमेश्वर पिता। लेट देयर बी ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ बाय नोइंग जीसस एज द ओनली ट्रू सेवियर मसाया एंड द क्राइस्ट ओ माय फादर। परमेश्वर पिता मैं मांगती हूँ प्रभु जी कि कनाडा में परमेश्वर पिता ऐसे नए दरवाजे खुले परमेश्वर पिता, ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले परमेश्वर पिता कि सिस्टर परमेश्वर पिता अब इस समझ को परमेश्वर पिता ग्रहण करके प्रभु जी बहुतों को इसके बारे में बताने वाली हो, ताकि वो वर्दी वंस जो आपने कनाडा में रखे हैं वो इनके साथ कनेक्ट हो सके परमेश्वर पिता। और आपकी बेटी के द्वारा से एक बड़ी बेदारी परमेश्वर पिता इस ट्रू गॉस्पल के द्वारा से प्रभु जी वो प्रचार कनाडा में हो परमेश्वर पिता, और जो भी फेक गॉस्पल का प्रचार हो रहा है परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी उसकी शक्ति को हम नल एंड वॉइड बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, परंतु परमेश्वर पिता राज्य के उस गॉस्पल की सामर्थ को मैनिफेस्ट होने दे कनाडा में, यूएस में परमेश्वर पिता सिस्टर नुसरत के द्वारा से परमेश्वर पिता। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ वर्ड्स बट ऑफ power. Father, I'm asking that this power may manifest in the lives of these two women, oh my Father, that like that Samaritan woman, oh my Father, they may become your preachers of the true gospel of Jesus the Christ, my Father. I pray that you empower them, Father God. I pray that you bring forth such fruits in their lives, oh my Father, and their fruits may not rot, oh my Father. Father God, I pray that you open their understanding, their mind, oh my Father, their spiritual understanding, Father, that everything of the old wine, oh my Father, may not be there anymore, oh my Father, but the new wine, the new understanding, the new revelation may dawn upon them in the name of Jesus the Christ, Father. I pray that Canada be gospelized, be evangelized. I pray that US be evangelized by the true gospel of Jesus the Christ, Father, and many more disciples may emerge, oh my Father. All those who are chosen already by you, Father God, all those who were already placed in their mother's womb with this calling, that they may become the evangelist of the true gospel of Jesus the Christ, Father. I pray, Father, that you do this beautiful work, this deep work, this digging in their lives, oh my Father, that they may know you more and more, that they may know your Son, Jesus Christ, that I may know your Son, Jesus Christ, more and more and live him in this life, that I may become an epistle, oh my Father, that they may become an epistle, that they may become a witness, the testimony of Jesus being the Christ in their lives, and how this revelation have changed their lives, oh my Father. I pray this for each one who's present here this evening. Thank you, Father, for Dr. Ravi, for his efforts, for the labor that he does for the kingdom of God, for the expansion of the kingdom, for the true gospel to be preached, oh my Father. I pray that you empower him in health, oh my Father. Empower him physically, mentally, emotionally, with sound health, sound mind, Father God. And I pray that you bless him
with the exuberance of your spirit, oh my Father. परमेश्वर पिता, धन्यवाद और शुक्र करती हूँ हर एक का जिन्हें दर्शन दिया आपने इस मिशन वर्ल्ड इवेंजलिज्म का पास्टर चो को, परमेश्वर पिता उनके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। पास्टर थॉमस एडिसीना के लिए धन्यवाद देते हैं, पास्टर मू और इवेंजलिस्ट नीना और जितने भी लोग जो रिसोर्स पर्सन है फादर गॉड, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बहुत सारे इवेंजलिस्ट और ट्रू डिसाइपल्स खड़े हो कनाडा में, यूएस में, इंडिया में परमेश्वर पिता, और इन जगहों पर बेदारी आए परमेश्वर पिता, वो बेदारी जो सत्य से आती है परमेश्वर पिता, that Father God, the spirit of conviction may convict the hearts of the people who are walking, Father God, in the fake, in the lies of my Father, that the truth, Father, may open their eyes and their spiritual understanding, Father. Thank you, Father, for this time and opportunity, for the time of fellowship, for the time of sharing of our hearts and the word of God, Father. Thank you, Father. In Jesus' most precious and holy name, I pray and I ask. Amen. 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 Okay, let's start our Lord's Prayer. हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिसमें अपने कसूर माफ करते हैं, आशा में दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जला हमेशा से तेरा ही है। आमीन। आमीन। कलाम बरकत। ब्रदर रवि, आप कलाम बरकत अदा करेंगे। Blessings of the Heavenly Father and the Son Jesus, who is the Christ, and the Holy Spirit be always with us and forever. Amen. 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 God bless you. Thank you, brother. God bless you.